Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining in. My name is Habib and I'm the program officer here at the Center for Excellence in Journalism. ये सेशन हम कर रहे हैं in collaboration with ICRC, जिनके साथ हम 2017 से Humanitarian reporting के ऊपर awards plus workshops करते आ रहे हैं. आज के सेशन पे हम बात करेंगे सोशल मीडिया की. हम ये देखेंगे कि उनकी क्या what are the impacts and opportunities क्या है with regards to humanitarian reporting और किस तरीके से हम ethical and responsible reporting promote कर सकते हैं through social media. We'll also talk about fake news and verifying news. आज हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब, सहर हबीब गाजी और साकिब तनवीर. इस सेशन को मॉडरेट करेंगे उमर बिन अजमल. Aamer Saab, senior Sahafi here, he has been a part of journalism for 32 years now. And he has covered almost every area from reporting to writing. He started his career for the Nation, and then he moved to the Herald as a bureau chief, and then he was the editor for the Herald as well. He then became the editor for BBC Urdu. Aamer Saab's last assignment was as the director news for Aaj TV. He now runs an education-focused technology company from Karachi. Sahar Habib Ghazi is a digital media strategist. She's a trainer and a journalist. She has been leading and building digital and broadcast newsrooms for 17 years now. She is the South Asia editor for Vice World News, has also reported for the New York Times, produced for Geo TV and Dawn News TV, a channel that she helped set up. And she also ran news operations at Global Voices from 2012 to 2018, where she mentored and trained hundreds of bloggers and reporters. We also have Saqib Tanveer with us, who is a journalist with a career spanning for almost a decade now. He's heading the social media desk at the Independent Urdu as a social media editor. Previously had worked for Geo News, Sama TV, Uptak News, and Capital TV. He's also a Shielding Fellow, as well as the Emerging Fellows of Pakistan program. Saqib also runs his own fact-checking portal by the name of Factnama. Luckily, all three of us have been our trainers and we've had a good experience, and we hope that we're able to have an interesting conversation today. I'll now hand it over to Umer bin Ajmal. Thank you so much, Fiza. I hope everybody can hear me. बहुत अहम टॉपिक है और वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो बगैर कोई वक्त जाए कि आमिर साहब आप कितना तजुर्बा रखते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरू करूं, जो टाइटल है हमारे इस आज के सेशन का, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टिंग के हवाले से, अगर आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल सकें. आमिर साहब, आई थिंक यू म्यूट. या, कैन यू हियर मी नाउ? जी, ओके. उमर, इसको अगर मैं सम अप करना चाहूँ ना, तो आई फील कि सोशल मीडिया ने न्यूज़ डिलीवरी को जिस तरह से बदला है, पीपल आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन लार्ज न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ जो हमारी ट्रेडिशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनके ऊपर अब उनकी डिपेंडेंस नहीं रही है. they have so many more avenues for getting their news. So उससे अनफॉर्चुनेट, उसका एक बहुत बड़ा एंड वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट जो हमें देखने में मिला है, वो ये है कि लोगों को ये लगता है कि क्योंकि न्यूज़ डिलीवरी का तरीका बदल गया है और न्यूज़ रिसीव करने का और कंज्यूम करने का तरीका बदल गया है, तो शायद सहाफती कानून भी बदल गए हैं उसके साथ. इट हैज़ ऑल्सो चेंज द रूल्स ऑफ जर्नलिज्म. और जो हमें ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के रूल्स पढ़ाया करते थे कि भैया सही बात करो, सच्ची बात करो, गलत अफवाहें ना फैलाओ, सारा दे फील कि अच्छा शायद उनमें भी कोई तब्दीली आ गई है, और वो शायद दे नाउ हैव मोर लीवे देन दे यूज्ड टू हैव विद द ट्रेडिशनल आउटलेट्स. तो एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली हमने महसूस की है अपनी सहाफत के ऊपर, जिसका बहुत ही एक डीप इम्पैक्ट हुआ है. दूसरी चीज़ ये है उमर कि अब अखबार में जैसे हमने करियर शुरू किया अखबार में, फिर हम रेडियो की तरफ गए, फिर टीवी की तरफ गए, कुछ लोग हम में से, हमारे पास अपनी पर्सनल फॉलोइंग असेस करने का कोई तरीका नहीं होता था. मेरे पास कोई तरीका नहीं था जब मैंने नेशन के अंदर रिपोर्टिंग शुरू की, तो ये बता सकूं कि जी आज जो अखबार बिका है उनका 10,000 बिके हैं, 50,000 बिके हैं, उनमें से कितने लोगों ने मेरी कहानी पढ़ी है, या मेरी जिस कहानी के ऊपर मेरी बायलाइन थी वो कितने लोगों ने पढ़ी है. सोशल मीडिया हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ काइंड ऑफ अ मेजरेबिलिटी इन योर पर्सनल रीच. तो उसका लालच जो है वो गालिब आ गया है सारी चीज के ऊपर.
So if you feel कि जी एक खास किस्म की चीज के बारे में क्रिटिकल होना, चाहे वो आपका क्रिटिसिज्म फैक्ट बेस्ड है या नहीं है, वो ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, तो सम पीपल फील दैट प्रेशर एंड दे स्टार्ट लीनिंग टुवर्ड्स दैट. कभी अगर आपको लगे कि एक गलत चीज को अगर आपने सपोर्ट करना है और उससे आपकी फॉलोइंग में इजाफा होगा या आपकी रीट्वीट्स और लाइक्स में इजाफा होगा, तो अगर आपको पता भी है कि असल में ये चीज दुरुस्त नहीं है, यू मे स्टिल बी टेम्प्टेड to do that in order to get those extra additional followers or additional likes and retweets and all that. So I think both sides, on the side of the journalist and on the side of the of journalism itself, it has had a very very deep impact. और ये अभी बहुत अरसे तक मुझे लगता है कि ये चलेगा. Please, over to you. मैं सहार को चाहूँगा कि कन्वर्सेशन में शामिल करूँ. सर, आपकी नज़र में आमिर साहब ने जो पॉइंट्स मेंशन किए कि तो रीच पता चल जाती है एक सहाफ़ी को कि कितनी उनकी खबरें पढ़ी जा रही हैं या उनकी अपनी रीच कितनी है, और ऊपर से एक उन्होंने एस्पेक्ट हाईलाइट किया कि लालच की वजह से, जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टोरी पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है तो जर्नलिस्ट आर मोर ड्रिवन बाय व्हाट रीडर्स वांट और what audiences want. So do you think in your experience as a digital strategist, and now you are taking at Wise, you're dealing with mostly digital. So do you think this is the case, or how can we navigate it then? I mean, it's a bit of reach, it's a bit of verification. There are all these things when you're making any piece of information. There's so many factors that come in. But I'd like to go a little bit back to like pre-internet days, or even in Pakistan, we can go back to pre-electronic media days, because my career pretty much started the same time as electronic media. So with, print journalism, there was, the deadlines were, at least 24 hours. So you had time to verify, you had time to check. There was like a whole system of process of the news and verification. And there wasn't this pressure to feed a machine. So that kind of happened with electronic media. But with electronic media, something else also happened. News production became glamorous because it was associated with the face, it was associated with fame. And then with internet, that became democratized, these two elements, the fame and the information, and even quicker. Digital media is even quicker than news. So there are those tensions. But I personally feel, if I look at the kind of journalism that we're seeing now in good digital media organizations in the US or in the West or in Africa or in Latin America has some amazing young digital media organizations. What they've managed to do is they've managed to understand what the audience wants and needs, also mixing it with a bit of social justice, if we're talking about humanitarian reporting, and then mixing it up with verified news and having a system and a process in place. And I feel like that's what's missing in Pakistan. I'm going to give you an example. Now, something I haven't actually spoken about on social media, but it's been bothering me for a few days. But what I would say one of the most popular English media, digital media organizations right now is Propaganda. Their Instagram page was even recently taken off because of some community violations. So about a week ago, they do a lot of clickbaity type headlines, which I also want to talk a bit about that. Like, clickbait means that someone's clicking in. That's fine. But if someone is clicking in just and you're giving wrong information, that's wrong. So they did a headline that was just inaccurate. Anyone who's above the age of 30 knew it was inaccurate. They basically said that Pakistanis, for the first time, PI is going to India. Flights have been resumed for the first time in 75 years. So anyone who's above 30 knows that's not true, because I took a bunch of flights in the early 2000s as well. So I put it up that, hey, you did this wrong. But they came in my DMs and they said, but other people put it up. I said, it doesn't matter if other people put it up. It's wrong. Take it down. Put an apology. And then they were like, no, but देखे ना दूसरे लोगों ने डाला है, आप हमारा बाकी काम देखें, read the post, read the details. I'm like, listen, your headline is wrong. So I even contacted the owners and I said the same thing. And again, they said, listen, we're a young organization. आप बाकी मेरे content के बारे में बात करें, आप इस पे क्यों? Then I sent them, CPJ's code of ethics. A basic thing: if you make a mistake, apologize, try to correct it. But there's no motivation to do it, not from the employees that are working in this fastest growing English-speaking millennial information site, and not with the people who are running it. So that's a problem, and that worries me deeply about digital media in Pakistan. But there are some who care. I feel like TCM really cares about the kind of content they do, and they do really deeper content.
So not to say that everyone is the same, but there's definitely a spectrum of concern. And I think that 15, 18 years in the middle, where it wasn't just about journalism giving accurate information, it became about fame and, just that kind of thing. It really, the culture around news somehow ended up not growing the way of, because we were in this complete news desert for many years, essentially. And so if we had been like growing constantly, suddenly, if the reporters in this country or the journalism schools had been growing at the pace they should have in the 60s and 70s and 80s, then perhaps they would have been prepared for what happened when the electronic media exploded in the early 2000s, and then with the internet, what happened a few years later. Sir, I'll come back to you on your point about journalism schools that you mentioned, but let me first get Saqib involved in the conversation. Saqib, you work for Independent Urdu, and Sahar also mentioned in one of her points that English language की digital audience काफी तेजी से बढ़ रही है, but you're working for Independent Urdu, and we're also seeing a rise in Urdu language mediums digitally. So how do you look at it when it comes to reporting on humanitarian issues in the age of social media? So if there's a barometer जिसको देखकर आपको जज करना हो कि पाकिस्तान के अंदर जो है उर्दू की कंजम्पशन कैसी है, तो I think you would have to look at the Twitter accounts of Imran Khan or even Maryam Nawaz Sharif. They used to tweet the stuff in English, in hardcore English. Even Maryam Nawaz used to have poetic English in her tweets. But now they've resorted to कि अब हमने उर्दू में करना है because we want to reach out to the masses. Also, if you were to look at Facebook's अपने जब statistics, तो Facebook does say that कि around 40 million के करीब उनके पास audience है world over जो कि उर्दू को understand करती है. So there's a huge market there, but पाकिस्तान के अंदर problem essentially ये है कि हमें जो उर्दू जर्नलिज्म है और इंग्लिश जर्नलिज्म है, अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर जो कंटेंट की क्वालिटी है उसके अंदर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो नजर आता है. सो उसकी वजह से जो इंग्लिश जर्नलिज्म है वो एक नीश को एसेंशियली उसने केटर किया है. बट अगर आप मासेस की जर्नलिज्म की बात कर लेंगे तो आपको अखबार नजर आएंगे, नया वक्त नजर आएगा, जो है वो जंग नजर आएगा, इस तरह के अखबार हैं जो कि उनको केटर करते रहे. बट जो है वो डिजिटल मीडिया के अंदर, और अगर मैं आपको एक कंपैरिजन भी बता सकूं, आज से 10 साल पहले अगर किसी को न्यूज कंज्यूम करनी होती थी तो वो हमारे पास आता था, वो जो टीवी लगाता था, 9 बजे का बुलेटिन देखता था, सुबह उसके घर पे अखबार आता था, अखबार खोलता था, मतलब टाइम लगा के जो है वो हमारे पास आया करता था. बट सोशल मीडिया की वजह से अब वो हमारे पास नहीं आता, हम उसके पास जाते हैं, हम उसकी टाइमलाइंस में जाते हैं, हम उसकी व्हाट्सएप चैट्स में जाते हैं, उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाते हैं, उसकी अटेंशन को सीख करते हैं. मतलब हम अटेंशन सीकर्स की हद तक हम पहुंच गए हैं बिकॉज देयर सो मच कंटेंट आउट देयर. तो उसकी जो है वो कंटेंट की जो डिसेमिनेशन है वो बहुत जो है वो हद तक जो है वो चेंज हुई है. फिर सहर ने बात की थी कि जो 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 उनकी वरी है रिगार्डिंग द सोशल मीडिया, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो उसको पॉजिटिव अंदाज में देखता हूँ. पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं बट पॉजिटिव अंदाज में वो ये है कि सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, देयर इज एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट, तो इट आल्सो लीव्स अ वैक्यूम, एक ऐसा वैक्यूम जो कि बहुत से जर्नलिस्ट के पास ऑप्शन है उसको फिल कर सके. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, तो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की मार्केट जो है वो पैदा हो चुकी हुई है और लोगों को जरूरत है. बहुत कम लोग होंगे बट लोग ऐसे हैं जिनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत है. सो एज अ जर्नलिस्ट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो हम उस वैक्यूम को फिल कर सकें, जो एक इरोजन ऑफ ट्रस्ट हुआ है उसको हम रीगेन कर सकें. बट आई कंप्लीटली एग्री विद हर कि जो सैंक्टिटी ऑफ जर्नलिज्म है इट हैज इरोडेड, और जो इन्फॉर्मेशन की जो डिसेमिनेशन बढ़ी है उसमें जो है वो डिजिटल मीडिया का बहुत ज्यादा रोल रहा है और शायद उसने एक्सेलरेट किया है. या थैंक यू सैकिब, थैंक यू फॉर इनपुट. आमिर साहब, अगर आप तीनों की गुफ्तगू में से अगर कोई पॉइंट मैं निकाल सकूं तो ये था कि इस एज में डिजिटल मीडिया काफ़ी परवान चढ़ रहा है, तो रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी डिक्लाइन की तरफ हैं. तो हाउ डू वी fix the situation? What do you think in your experience should be done? Amit sir, I think you're mute. Yeah, sorry. ये जो साकिब ने इरोजन ऑफ ट्रस्ट की बात की है, या उससे पहले सहर ने अपनी परेशानी का इजहार किया है कि डिलिबरेटली मिसलीडिंग हेडलाइंस का इस्तेमाल उन्होंने एक एग्जांपल में दिया है. When I look at it, I feel that there is actually no reason for it to happen.
And उसकी वजह ये है कि what has happened, if you look at it, right? Whether you were working on a newspaper, on a radio, or in a TV, your roles were very specialized roles. There were reporters, जिनका काम होता था news gathering, information लेके आना. There were producers, जिनका काम होता था वो खबरें package करते होते थे. Right? There was your admin, जिसका काम होता था, या आपका जो broadcast structure, जिसका काम होता था कि वो जो खबर आई है और उसकी पैकेजिंग हुई है उसको आवाम तक पहुंचाया जाए. And then there were a consumer, there were consumers, news consumers, जिनका उन तीनों processes के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. What social media has done is it has merged all these roles. So everyone is now a reporter, a producer, and a broadcaster while still being a consumer. Right? So what I don't understand in this thing, fine, ये हुआ है, बहुत अच्छी बात है. साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, डेमोक्रेटाइजेशन का. बड़ी अच्छी बात है कि क्यों खबरें यहाँ ज़राए अबलाग जो हैं ये महदूद क्यों रहे एक तबके तक. ठीक है ना. ये कोई उस तरह की स्पेशलाइज, ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म जिसके साथ तवसत से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनके डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर होते थे कमाल सिद्दीकी साहब. वो हमेशा अपनी हर बात जो है ना हमारे ट्रेनिंग सेशन में वो ये कह के शुरू किया करते थे कि जर्नलिज्म शायद दुनिया का वो वाहिद प्रोफेशन में से एक है जिसमें आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होती है. आपको डॉक्टर बनने के लिए MBBS चाहिए होता है, लॉयर बनने के लिए लॉ डिग्री चाहिए होती है, इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए होती है. जर्नलिज्म कोई भी जर्नलिस्ट बन सकता है आके वो सारा. फाइन, बट व्हेन दीज रोल्स हैव मर्ज्ड एंड एवरीवन हैज बिकम एवरीथिंग, माय क्वेश्चन इज कि वो साहब ही कहाँ गए हैं यार, जर्नलिस्ट कहाँ गए हैं? ये जो क्रेडिबिलिटी का इशू है ये कहाँ से डेवलप किया है? राइट. सो ऑन द कंज्यूमर वी टॉक अ लॉट अबाउट कि जी जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको बताया नहीं जाता, सिंपल चीजें नहीं उनको पता होती. फॉर एग्जाम्पल इन BBC, व्हेन BBC woke up, बड़ी देर से उठा BBC, सोशल मीडिया को उसने रिकग्नाइज किया कि हाँ अब ये बहुत बड़ा मीन्स ऑफ डिलीवरी बनता जा रहा है. तो व्हेन BBC woke up, one of the first bits that they told us while they were training us, कि you cannot say anything on your Twitter account, whether it's your personal Twitter account or an official Twitter account. You cannot say anything on your Twitter account which you cannot say and defend as a BBC journalist. चाहे वो आप अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं, चाहे वो अपने सरकारी अकाउंट से कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पर वो भी नहीं, ये चीजें नहीं बताई जाती. मैं अपनी वर्कशॉप में जब इसका जिक्र करता हूँ तो बड़ी हैरानगी का इजहार किया जाता है, और ना सिर्फ हैरानी दिखाई जाती है, और बहुत से लोग जो है वो बड़ा होल हार्टेडली एग्री भी करते हैं. लेकिन यूं ही वर्कशॉप खत्म होती है, रात को जो उनकी ट्वीट्स होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं ज़्यादातर केसेस में जो पहले वाली जो होती हैं. तो ये चीज़ तो डेफिनेटली हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग जर्नलिस्ट हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं, वो तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो दे फॉल टू सच प्रेशर्स. आई फील कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कंज्यूमर्स की ट्रेनिंग होती है ना, जो कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग है ऑफ न्यूज़ एंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू टेल बिटवीन ऑथेंटिक एंड फेक न्यूज़, वो ना तो हो सकती है, ना उसका कोई तरीका है कि आप 2 बिलियन लोगों को जो है वो ट्रेन करें इस चीज़ के अंदर. द ओनली वे फॉरवर्ड इज टाइम. वक्त के साथ साथ ठीक होगा. अभी क्या हुआ है कि कंज्यूमर्स की तरफ से जो प्रेशर आया है कि जी मैं आपको तब फॉलो करूंगा अगर आप इस पार्टी के खिलाफ ट्वीट करते हैं, मैं आपको तब फॉलो करूंगा अगर आप जो है सेकुलरिज्म की बात ना करें, फॉर एग्जाम्पल. जस्ट थ्रोइंग आउट एग्जाम्पल. तो ये जो प्रेशर आया है उसको एज अ जर्नलिस्ट आई कैन रेजिस्ट इट. ओके जी, यू डोंट वांट टू एग्री विद मी और यू वांट मी टू डू अ सर्टेन लाइन, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, प्लीज डोंट फॉलो मी. लेकिन जो कंज्यूमर है वो जब शिकायत करता है फेक न्यूज की, अरे भैया आप मिस्टर XYZ की खबर के ऊपर या उसकी की हुई बात के ऊपर इतनी तवज्जो दे क्यों रहे हैं? अभी भी ऑथेंटिक इदारे तो है ना, ये तो नहीं है ना कि ये अच्छी सहाफत और प्यारी सहाफत के इदारे ही खत्म हो गए हैं सोशल मीडिया के साथ, वो मौजूद है ना. तो आप उनको क्यों नहीं, आप उन पर क्यों नहीं इंहिसार करते इन हाई सिचुएशन? सो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट लाइक आई सेड, कुछ ऐसी सूरत हाल होती है उमर जिसके अंदर आपका वाहिद हाल, कोई मसला अगर आपको पड़ता है तो उसका वाहिद हल वक्त होता है. वक्त के साथ साथ इसमें भी बेहतरी आई. हमने 8-10 साल का ऐसा पीरियड देखा है जब जो हुकूमत के पास एकदम से अखबारों को इजाजत मिली कि आप बगैर लाइसेंस के भी अखबार छापना शुरू कर सकते हैं. ऐसे ऐसे अखबार निकले
ऐसी ऐसी उन्होंने हेडलाइंस लगाई कि बंदा दंग रह जाता है उसको देख के। वी सो द सेम थिंग हैपनिंग, जो आजकल आपका पाकिस्तान में टॉक रेडियो तो है नहीं, लेकिन जो म्यूजिक रेडियो के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं कि आप लोग अपने अपने शोज भी कर रहे हैं, ऐसी अजीबोगरीब बातें कर देते हैं वहाँ पे कि आपको समझ नहीं आती। टीवी इज द सेम थिंग, राइट? बट over a period of time, this thing is going to evolve. It is going to get better. However, ये जिस period, evolutionary period हम इस वक्त गुजर रहे हैं, this is a particularly difficult. जी. थैंक यू सो मच आमिर साहब फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। सर, ये आमिर साहब ने जहाँ पे बात अपनी खत्म की है तो वहीं से मैं शुरू कर सकता हूँ, और अपना जो आपने एक जर्नलिज्म स्कूल वाला पॉइंट भी मेंशन किया था। सो क्या हम वक्त का वेट करें कि वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी, या जर्नलिज्म स्कूल्स जो हैं उनको बेहतर तरीके से ट्रेन करना चाहिए जर्नलिस्ट को? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? No, I don't think that is the solution, because again, like you don't have to be go to journalism school to be a journalist. I didn't go to journalism school, so a lot of things were self-taught. And then I think jo values hote hain na journalist ke, and this is what I do in my CEG workshops, which is why I spend a whole day talking about core values, because I think that's where the problem comes in. If you want to go into the information dissemination kind of profession, if you want people to care about issues, then your values need to be aligned with a couple of core values. For example, curiosity, definitely, but also accuracy and humility. If you make a mistake, correct yourself. We are talking a lot about the negative, but I think what social media has also done specifically for humanitarian reporting has really opened up बहुत से avenues खुल गए हैं। अगर आप सोचें इसके बारे में, for example, कराची में अगर देखें, कराची बचाओ तहरीक, इसकी पूरी जो information dissemination, it has happened through digital media, because जो organizers हैं, and वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, mainstream media इस तरह के issue को नहीं उठाती। अगर उठाती है तो बस स्लो न्यूज डे होता है, रिपोर्टर को भेज देते हैं उधर, जी घर तोड़ रहे हैं, प्लीज जाके थोड़े से फुटेज करके ले आए, और थोड़ी सी अखबार में बैक पेजेस पे एक छोटा सा शायद हो अगर कोई मर गया हो you know, but in general digital media has kept the story alive. अगर और आप और भी social issues देखें, आप motorway rape case देखें, I do not think the motorway rape case जिस तरह, और या फिर आप justice for Noor वाला campaign देखें, I don't think either of these would have gotten the kind of massive national attention without digital media, and without that link between digital media organizations recognizing that social justice issues are important to some audiences, specifically in some areas. Agar aap women's rights issues mein dekh lein, this is something I've been seeing in digital media now. Been working in digital media for 13 years. Women's rights issues have always done really well on the internet. Why? There are more men on the internet than women. Why? Because women do not feel like mainstream media addresses the issues. Simple सी चीज मैंने अपनी सहाफत में देखी है पिछले 17 years में, the language around how we talk about violence against women वो change हो गया है। पहले जो acceptable था वो unacceptable है। जिस तरह victim blaming की बात हो जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते फिरते हैं, लेकिन बाकी सबको पता चल गया है कौन सी लैंग्वेज है जो नहीं इस्तेमाल करनी हम जब विक्टिम से बात कर रहे हो, चाहे वो औरत हो, बच्ची हो, बच्चा हो या आदमी हो। तो ये सब ना, आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग दैट हैज कम फ्रॉम डिजिटल मीडिया, क्योंकि वो जो एक कनेक्शन था ना, फीडबैक लूप, आमिर साहब ने बात की, this how before digital media information used to be this way, right, from the reporter to the producer, editor, admin, and then consumer. But it's like a circle now with digital media, so like feedback loop hota hai where reporters know. I remember the first time I wrote a blog, right when I had left on news, I had like 6 months in the middle of this fellowship I was doing, and I started blogging. So one of the first blogs I did was on the WikiLeaks, and usme I had not even realized, like I wrote a piece that would have been perfect for like an editorial page in a Pakistani newspaper. Everyone would have been aligned with it, but in the comment section I got 100 hate comments from Indians and Afghanis. So then I realized, okay, wait, उस ज़माने में जो WikiLeaks थी, it was all around the spy games जो चल रहे थे अफगानिस्तान में. So ISI को काफी बुरा कहा था उस ज़माने की framing में. This is 2000. This is before even Osama bin Laden. So 2010 की मैं बात कर रही हूँ. So I realized, okay, wait, now I'm not just writing for Pakistani audiences. I'm writing on you know, it was a Dawn blog, but I'm writing for global audiences. So I have to think about all the preconceived notions they have around context. And obviously, we have different ideas of the Afghan war than Indians do. And really seeing this again since post-August again, or the Afghans do.
So आपकी learning process भी होती है. So I learned a lot from that, from someone who's covering the Swat offensive, you know, from a very Dawn News was very holding the government accountable for what was happening. हम जब भी death toll बताते थे 2007 वाले offensive में, हम कहते थे कि we cannot verify these figures that the military is giving us because we don't know, we don't have access to these areas, we do not know civilian casualties कितने हैं. ज़माना बहुत change हो गया तब से, अब हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते टीवी पे. तो ये भी बहुत changes आए हैं. So because mainstream media cannot say a lot of things, they can't be critical of so many institutions. But digital media, because it's not watched and censored as much, then kabhi kabhi usme information aa jati hai. I would say the richest journalism on Baloch missing people is from individual digital reporters. It's not like, you know, they haven't been intimidated or threatened the ways that big institutions have, but it's very different the way it happens when it's an individual versus like a whole institution. एक अखबार के पूरी advertising impact हो जाती है. So then it's a slow trickle down effect के 10 साल के अंदर अंदर suddenly you start seeing massive censorship which you would never have imagined. So I think there's a lot of space in digital media for picking up stories that powerful people don't want you to pick up, number one, and then issues that we just don't pay attention to because the communities are so marginalized. Thank you so much, Sahar, for these very valuable points. And Saqib, मैं सहर ने आखिर में जो चंद बातें की हैं सहार ने, मैं उससे ही आपसे शुरू करना चाहूँगा कि challenges हमें पता एग्जिस्ट करते हैं और हमने negatives की बात कर ली जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन opportunities भी बहुत है फिर इस वैक्यूम में, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अगर ह्यूमैनिटेरियन स्टोरीज को नहीं पिकअप कर रहे जैसे कराची बचाओ तहरीक वगैरह है, बट हमें ये भी पता है साथ में कि पाकिस्तान में माहौल इस वक्त साजगार नहीं है एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए. इंडिपेंडेंट उर्दू पूरा डिजिटल उनकी प्रेजेंस है. So how do you see the situation, and how do you find opportunities in such circumstances? एक तो पहली बात ये है कि I understand कि there are a lot of issues in terms of freedom of information and freedom of access. और मैंने बहुत से जर्नलिस्ट को ये कहते सुना है कि मतलब कहते सुना नहीं, मतलब वो सही कहते हैं कि जो है वो इतनी आज़ादी नहीं है. बट यू नो कुछ एरियाज के ऊपर रेड लाइन्स हैं, बहुत सी एरियाज हैं जिनके ऊपर देयर इज नो रेड लाइन. सो मैं हमेशा जो है वो फॉर एग्जांपल जब भी ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं, जब स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि देखें जी सेंसरशिप है, हमें बात नहीं करने दी जाती, हम जो लिखना चाहते हैं वो नहीं लिख सकते, जो रिपोर्ट करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते. एक तो एवरीबडी वांट्स टू रिपोर्ट ऑन पॉलिटिक्स, बट जिन एरियाज के अंदर हमारे पास फ्रीडम है, क्या हमने उन एरियाज को कम्प्लीटली हमने उनको यूटिलाइज कर लिया है? क्या हमने उनके ऊपर कंप्लीट रिपोर्टिंग कर ली? फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटेरियन स्टोरीज के ऊपर अगर हम बात कर लें तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं. आप स्टेटलेस बंदों की बात कर लें, जो कराची के अंदर रोहिंग्या है, बांग्लादेश से जो है वो लोग आए हुए हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमने आज तक पेशावर के अंदर जो है वो पखीवास हैं, लाहौर के अंदर है, उनके ऊपर कभी रिपोर्टिंग नहीं होती. सो जो फ्रीडम ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमने उसको जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लिया है? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये जो सेंसरशिप है ये एक अच्छी चीज़ है, बट आई थिंक एट सम पॉइंट हमें एज अ जर्नलिस्ट हमें भी देखना होगा कि जो ऑलरेडी फ्रीडम हमारे पास अवेलेबल है हमने उसको कितना यूज़ कर लिया है. सेकंड, मैं ह्यूमैनिटेरियन स्टोरीज के हवाले से बात करना चाह रहा था कि देखिए सोशल मीडिया जो है ना, उसने जो स्टोरी की पैकेजिंग है उसके डायनामिक्स उसने चेंज कर दिए. सो अभी सहर ने बात की कि हमारा जो टीवी है वो जो है वो ह्यूमैनिटेरियन स्टोरीज को पिकअप नहीं करता, एंड शी इज राइट, बट आई थिंक ग्रेजुअली वो चेंज हो रहा है. फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉर आवर टीवी चैनल्स, मैंने टीवी चैनल के लिए जो है वो 7-8 साल काम किया है. एक तो ऑल ऑफ अस वांट्स टू डू रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिक्स. फॉर अस पॉलिटिक्स इज सेक्सी, ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्टिंग इज नॉट सेक्सी. हम में से कोई खड़ा होकर बाहर ये नहीं बताएगा कि एक चौकीदार का दिन कैसे गुजरता है, वो उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं करेगा. एवरीबडी वांट्स टू डू अ पिलिट्सर स्टोरी जिसके अंदर वो बता सके कि जी कैसे एस्टेब्लिशमेंट काम करती है, कैसे जो है वनहुली काम कर रही है. बिकॉज सेक्सी चीज है, हर कोई ये चीज जो है वो करना चाहता है, एंड इट्स पावरफुल. बट अब सोशल मीडिया की वजह से हुआ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट की शेयरेबिलिटी है उसने सारी गेम चेंज कर दी. सो अब आपने देखा होगा कि लोग किस तरह का कंटेंट अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते हैं. आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे जो कि किसी टॉक शो का क्लिप अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर रहे होंगे. लोग वो कंटेंट अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते हैं जिसको शेयर करने से वो खुद इंटेलेक्चुअल लगे या खुद वो अच्छे लगे. सो फॉर एग्जांपल इफ दे आर शेयरिंग अ स्टोरी जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एक एलिमेंट है, इसीलिए आपको नजर आता है कि जब भी कोई डोनेशन की अपील्स होती हैं तो वो फेसबुक के ऊपर वायरल हो जाती है, बिकॉज पीपल वांट टू शेयर कंटेंट जिससे वो खुद अच्छे लगे, चाहे उनकी वो जो है वो वैल्यूज ना भी हो, बट दे डू शेयर दैट कंटेंट जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एंगल होता है जिससे वो खुद अच्छे लगे, जिसकी वजह से
جو نیوز آرگنائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہیومن انٹرسٹ کی اسٹوریز اب کرنا شروع ہو گئی. فار ایگزامپل اگر میں انڈیپینڈنٹ اردو کی بات کروں تو ہم بہت زیادہ ہیومینیٹیرین انٹرسٹ کی اسٹوریز جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اب ٹی وی چینلز نے سوشل میڈیا سے اسٹوریز جو ہے وہ پک کر کے اب چلانا شروع کر دی ہیں. آپ کو بہت دفعہ نظر آئے گا کہ مارننگ شوز کے اندر آپ کو بہت سی ایسی اسٹوریز ملیں گی جو کہ پہلے بی بی سی کے اوپر چل چکی ہیں یا انڈیپینڈنٹ اردو پر چل چکی ہیں یا DW کی بات کر لیں ان کے اوپر چل چکی ہیں. سو ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ایک تو ان کا بھی ایک میرج ان کی ہو چکی ہوئی ہے ڈیجیٹل کے ساتھ, ان کا جو کانٹینٹ ٹی وی کے اوپر پروڈیوس ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل کے اوپر بھی جاتا ہے. سو انہوں نے اس کو بھی فیکٹر ان کر لیا ہے. بٹ ڈیجیٹل انہیں فوراً سے بتا بھی دیتا ہے کہ کون سا جو کانٹینٹ ہے ہٹ ہے, کس کے اوپر آئی بہت زیادہ آ رہی ہے, تو وہ وہاں سے اسی کانٹینٹ کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. سو ہیومینیٹیرین جو ہے وہ رپورٹنگ وہ بڑھ رہی ہے, وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ اس کو ہونا چاہیے, اور وہ جو ہے وہ ابھی اپنی کرنٹ شیپ کے اندر کافی سپرفیشیل ہے. سو اگر آپ کو ان ڈیپتھ اسٹوری کرنی ہو, جن اسٹوریز کا ذکر ابھی سحر نے کیا ہے, وہ انفارچونیٹلی ابھی ٹی وی کے اوپر ہو نہیں پا رہی. ایک تو پرابلم یہ ہے بیکاز ٹی وی کے لیے کانٹینٹ پروڈیوس کرنا از ویری ایکسپینسو, اور اگر آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل ان ڈیپتھ اسٹوری کرنی ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سب سے ایکسپینسو چیز تو جو ہے وہ ہیومن کیپٹل ہے, وہ آپ کو پہلے چاہیے, پھر آپ کو ریسورسز چاہیے. ابھی ٹی وی چینلز کے اوپر آپ ٹاک شوز دیکھ لیں, یا ایون آپ ایک رپورٹر کا 90 سیکنڈ کا پیکیج آپ دیکھ لیں. ایک ٹاک شو کو پروڈیوس کرنے کے اندر میں نے اپنی ساری زندگی میں ٹاک شوز ہی پروڈیوس کیے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹاک شو پروڈیوس کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آسان سی چیز ہے. اس سے مشکل کام جو 90 سیکنڈ کا پیکیج ایک رپورٹر, ایک اچھا رپورٹر جو ہے وہ پیکیج کر کے لاتا ہے, اس میں وہ پورا دن لگا دیتا ہے. سو کانٹینٹ کو پروڈیوس کرنا جو ہے نا کافی ایکسپینسو کام ہے, اور شاید اسی لیے ہمارا جو ٹی وی چینل ہے, جو مین اسٹریم میڈیا ہے, اس نے وہ روٹ ابھی تک لیا نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اب کوشش کر رہے ہیں, بیکاز جو ریٹرنز ہیں آپ کو امیڈیٹلی نظر آ جاتے ہیں, فیڈ بیک انسٹنٹ ہے, آپ کو اپنی سکسیس فوراً سے نظر آ جاتی ہے. تو اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو اس کی شیئربلٹی کی وجہ سے اور اس کا جو انسٹنٹ فیڈ بیک ہے اس کی وجہ سے ہیومینیٹیرین انٹرسٹ کی اسٹوریز کی بہت زیادہ اٹریکشن ہے. تھینک یو ثاقب. عامر صاحب, اگر آپ ہیں ہمارے ساتھ سیشن میں اس وقت, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ثاقب نے ابھی مینشن کیا ایک بڑا اہم پوائنٹ کہ جو میڈیا پالیٹکس کے اوپر زیادہ obsession ہوتی ہے رپورٹرس کی, اگر obsession ایک مناسب ورڈ ہے یوز کرنے کے لیے, اور سب وہی رپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں نیوز رومز جو ہیں, آپ نے آج ٹی وی ہیڈ کیا, آپ بی بی سی میں بھی رہے, سو ڈونٹ یو تھنک یہ ایڈیٹرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ صحیح اسٹوریز آئیڈینٹیفائی کروائیں اور میک شور کریں کہ ان کی کوریج بھی ہونی چاہیے؟ لیکن ایبسلیوٹلی اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا نا, کیونکہ اگر ایڈیٹر نے یہ کام بھی نہیں کرنا تو پھر وہ کیا کام ہے اس کا, وہ ایڈیٹر اپنے آپ کو کیوں کہلاتا ہے, کیوں بنا ہوا ہے وہ ایڈیٹر. سو دیٹ از اسینشیل. لیکن میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا جو ثاقب نے کہا. اس نے کہا کہ یہاں پر لوگ زیادہ تر پالیٹکس پہ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے بٹ وائڈر دین دیٹ. کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں جو بھی اسپائرنگ جرنلسٹ ہے کہ وہ اپنا کریئر جرنلزم کے اندر شروع کر رہا ہے, وہ اس معاشرے کی سب سے بڑی کہانی پہ رپورٹ کرنا چاہے گا. It's not necessarily about politics, Saqib, and please correct me if I'm wrong. My understanding is, in Japan, for example, an emerging reporter would look at reporting on corporations and reporting on economy because it is the biggest story in Japan. In a lot of Latin American countries, sports, football is one of the greatest stories across Latin America, and people would like to go into sports reporting. Unfortunately, हमारा जो मुल्क है, if you look at the Scandinavian countries, right, وہ تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں ہیومن رائٹس وائلیشن کا کوئی انسٹنس ملے, تاکہ کیونکہ وہ بہت بڑی کہانی ہے, وہ بڑی ویلیو کرتے ہیں انڈیویجول رائٹس کو, وہ سوسائٹیز. انفارچونیٹلی ہمارا جو سارا ریجن ہے, اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو پاکستان, یہ پورے ریجن کا ایشو ہے. یہ ریجن کیونکہ پولیٹیکلی, ایڈمنسٹریٹولی اینڈ ان ٹرمز آف اٹس گورننس اتنا شیکی ہے, چاہے آپ انڈیا کی بات کریں, پاکستان, افغانستان, Bangladesh being one of the more stable countries on the spectrum, کہ اس میں سیاست ہی سب سے بڑی کہانی ہے. اینڈ سیاست کے اندر جو ہم نے انفارچونیٹلی اپنے لیے ایک رول طے کیا ہوا, اور وہ ہم نے بھی نہیں کیا, وہ ساری میڈیا کی مجبوری ہے. واٹ ہیپنس کہ صحافت ویکیوم سے نہیں بنتی ہے, وہ ایک فیکٹ آن دا گراؤنڈ ہوتا ہے جس کو جرنلسٹ پک اپ کرتے ہیں اور ان کو اپنی آڈینس میں ایک خاص اس کے پس منظر میں, اس پہ کانٹیکسٹ میں ڈال کے وہ لے کے جاتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انفارمیشن فلو کا ایک ویل ڈیفائنڈ روٹ ہو, کہ اگر حکومت ہے, ایک حکومت کوئی فیصلے کرتی ہے یا فیصلے کرنا چاہ رہی ہے, تو اس کے بارے میں
तमाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीडिया को वो फराहम करे ताकि मीडिया उसके ऊपर एक इंटेलिजेंट और इन्फॉर्म्ड डिबेट जनरेट कर सके, जिससे हुकूमत को भी फायदा हो, जिससे लोगों को भी फायदा हो। यहाँ पे हुकूमत किसी कुछ बताती तो है नहीं है। दैट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ब्रोकन, आपको कुछ पता तो चलता नहीं है किसी से। सो हमारी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जो है वो भी महदूद हो गई है स्टेटमेंट्स पे, और एक रिपोर्टर जो है वो आजकल खुश हो जाते हैं अगर उनके टॉक शोज के ऊपर दो सियासतदान झगड़ा शुरू करते हैं बैठ के, तो वो बड़े खुश होते हैं कि जी आज हमारा बड़ा ज्यादा हिट प्रोग्राम किया। So this is a pattern that will be followed, always will be followed, that aspiring reporters will always go for the biggest story in their own respective societies. अब हमारे यहाँ अगर human rights was a big thing, individual rights or humanitarian reporting was a big story, so we would all see probably कि एक young emerging reporter आया है वो सारा, तो they would want to focus on humanitarian reporting rather than political reporting or business or economy or sports reporting. अब हमारे यहाँ वो कहानी है ही नहीं। उसके बावजूद जो इसकी जो प्लस साइड है, ठीक है वो दो धारी तलवार की प्लस साइड ये है कि सोशल मीडिया में ने एक रिलेंटलेसनेस क्रिएट की है कि पहले अखबार में एक दिन खबर छपी, कोई ह्यूमैनिटेरियन इंसिडेंट हुआ ऐसा जो कि रिपोर्टेबल है और जिसको होना चाहिए, अखबार में एक दिन खबर छपी, 24 घंटे कुछ नहीं हुआ, अगले दिन फिर अखबार में खबर छपी, 3 दिन 4 दिन 5वें दिन आपका एडिटर कहता था यार बहुत पीट ली हमने ये खबर, अब बंद कर दें। सो उसका लाइफ स्पैन 1 हफ्ता हुआ करता था। टीवी पे शायद उससे भी छोटा है, आप 2 दिन चला लो, 3 दिन चला लो, अनलेस न्यू थिंग्स आर हैपनिंग, न्यू डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, वो स्टोरी डाइज इट्स नेचुरल डेथ। Social media can keep that story alive. It gives it a longevity and it gives it a relentlessness. और जिस मुल्क के अंदर ग्राउंड बेस्ड रियल पॉलिटिक्स नहीं है, जिस मुल्क की सियासत महदूद है सियासतदानों के टीवी पर बैठ के बयान जारी करने पे या सोशल मीडिया पर बैठ के बयान जारी करने पे, दे आर आल्सो वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स टीवी एंड सोशल मीडिया एंड व्हाट इट इज। सो response, the state and the government's response towards humanitarian stories has dramatically improved Pakistan जैसे मुल्कों के अंदर. That is a big plus side of it. थैंक यू आमिर साहब। सहर, ये आमिर साहब ने अभी मेंशन किया कि लाइफ स्पैन स्टोरीज की होती हैं, तो 2 टॉपिक्स हैं। पहले तो मैं आपसे लाइफ स्पैन की बात कर लूँ। हम सोशल मीडिया पे लेट्स से कोई चीज़ बहुत ट्रेंड हो रही है एंड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फोर्स टू टेक इट। लेट्स से अभी कल परसों की मिसाल ले लेंगे, बलूचिस्तान में कुछ पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक हुआ। अब लेकिन कल ही PSL का मैच भी हो रहा था, तो अब लोग प्रोटेस्ट पे भी बात कर रहे हैं, लोग PSL पे भी बात कर रहे हैं। कोई और बड़ा इवेंट हो जाता तो लोग उस पर भी बात कर रहे होते। तो इसमें फॉर माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दिस के पीपल एक ट्रेजेडी पे भी बात कर रहे हैं, फिर एक क्रिकेट की खुशियां भी मना रहे हैं, और ऑडियंस डिवाइडेड है। मेरे ख्याल से वही लोग, ऐसे भी ऑडियंसेस होंगे जो तीनों इवेंट्स पे बात कर रहे होंगे। So can we taking this as an example, can we question the seriousness of the platform of social media? What do you think? Well, there are a couple of different things, right? So I think the biggest news on social media, Pakistani social media yesterday was Shiza Fiza. It was none of these things. So it's also, I feel like sometimes, so I haven't been working in Pakistani media in a while, and my only real connection with Pakistani media is when I do these trainings for CEJ. And one of the things that shocks me the most is how disconnected journalists, digital also, and mainstream are from audiences. There's a problem there. And I think there's this level of, I don't know why it happens, but for example, Saqib aapne bhi bola na, politics is sexy. Nothing is as unsexy as politics on social media. People are not interested in it. I'm still astounded. Like when I joined TV, and Aamer actually was the person who hired me for Dawn News. He worked there for, I don't know, a few days, but I worked with him for 1 day. So when he hired me, I remember what his vision was. He was like, I'm so proud of that. I'm so proud of that. Please carry on. And he hired me as a politics reporter, so like for national. He's like, we want to talk about how politics impacts people, right? And that's what we did at Dawn News. Like I remember मैंने इतने पर्दे किए थे अपने seniors के साथ जो अखबारों से आए थे. And oftentimes because a producer, a senior duty editor is in charge of what goes on screen, they be like, ये headline चलेगी जब Charter of Democracy का ज़माना था ना. And I'd be like, किसी कुछ नहीं होगा, ये हो चुका है, ये इसी तरह चलती रहेगी दुनिया. And we've seen this repeat or whatever. And
there'd be like there was a horrific case was zamane mein of this young 2-year-old child who had been found murdered and raped. So we picked up that issue, made it our first headline. And that was the first time on TV a sexual abuse story became a headline. हमने चलाया, तो फिर जियो ने भी चलाया, फिर बाकी उर्दू चैनल्स ने भी चलाने लगे, और फिर वो चला till there were 2 traffic cops who were linked to the murder. जब तक उनकी sentencing हुई, that stayed in like the first 5 minutes of news for like 3 months. And a politician picked up the issue. Sharmila Faruqi. She was the special advisor on human rights or something. So that's how you do politics. That's sexy. Like sometimes I think about it as zamane mein Twitter, Facebook nahi tha. Facebook shayad tha, but Istar News was not a big thing on it, and we didn't have big Pakistani audiences. But I think about it, you know, how would that story have gone forward if there was social media? I don't think it would have gone forward the way it did, because the 2 convicts, they were tried by an anti-terrorism court. Because speedy justice चाहिए थी, हमारे courts में कहाँ speedy justice होता है. I think social media उठा लेता कि ये anti-terrorism courts क्यों हैं? We want a fair trial, speedy trial, but fair trial. So social media really changes the dynamics of things both ways, the way the news story is made, and just आपने कहा ना कि lifespan क्या होती है? It picks up issues longer. Maybe it changes the dynamic of things. Abhi Karachi Bachao Tehreek, they recently reported that the organization, that they had a big win in the sense that jo road bana rahe the, they were demolishing houses. This is like a big project in Karachi. It's funded by World Bank. They're, you know, wiping out a bunch of slums or informal homes that have been there for a while. Families are losing their homes. And so instead of the road being, I think, 30 feet or under 20 feet, so a lot of homes are going to become saved. So they consider that a success story. Why is that not on national media? You know? And honestly, it didn't live that long on social media as well, but it was a little success story. I mean, a lot of people are going to be, they're saving their homes in it. So there's a bit of a mismatch, I think, in terms of audiences, in terms of the people that are creating the news. There's so much more that I think needs to happen right now in Pakistan. And a lot of it does have to do with this lack of transparency that Aamer mentioned. Hamari government, agar apne politics ko cover karna hai, I feel like for a person who wants to sound smart, just like aapne Saqib ka, they should know who are the politicians, the legislators who are actually writing legislation, who are changing this country. Kisi ko pata hi nahi hota. You know, even if you look at our National Assembly, you see reporting out of it, it is boring and it is sad. You know, I don't want to see these people represent me. It's embarrassing. हम politics को देखते हैं, हम कहते हैं personality और फड्डा, बस ये 2 चीजों में interest है. I think the biggest political story of the last year was Maryam Nawaz Sharif's outfits at her son's wedding. So it's sad. But you know what? If sometimes I think about it, because I look a lot at digital media in Latin America. Sorry? It's not sad. Yeah. It's not? It's not sad. Okay. Yeah, you're right. Yeah, you're right. It's not sad. Like, I think Maryam Nawaz Sharif is only a few. I'll tell you what part. I'll tell you what I think is not sad about it. In Pakistan, there's a lot of ageism when it comes to women. So, for example, I'm 40 years old, and I don't look like I'm 40 years old. But why? Why do we have this idea of what a 40-year-old woman should look like? Why should I be a nani dadi at this age? You know. So I feel like she broke a lot of stereotypes there of what a woman her age should look like, or what a grandmother should look like. And those are social issues. So I do think that there's the good part of it, but also there's like the accountability part of it. I wish we had citizen journalists or digital media journalists who actually put a number figure on that wedding and made that a headline and said, this is the amount of money they spent on this wedding. This is the amount of money they're accused of corruption. This is the amount of taxes they've been filing the last few years. But that didn't become a story. It became like these 10 lakh outfits that she was wearing, which very few news organizations mention. It would be so easy to find out the money figure of those outfits because ये सारे बड़े designers ने बनाए हुए थे. पर उस तरह की हमने reporting ही नहीं देखी. मुझे सहर ये तो नहीं पता कि outlets की कीमत क्या थी, but I can guarantee that they'll be very, very offended by you for describing their outfits के 5, 10 लाख के हैं. उतने का तो मेरा ख्याल है एक जूता होगा उनका, not the entire outfit.
جی ثاقب, I'm still interested کہ آپ نے جب کہا کہ نہیں it's not sad, so what was it that you meant? Yeah, so میرے لیے it was a very interesting episode. For me it wasn't sad. For me it was refreshing to see کہ پاکستان کے اندر an event like a شادی could be this much political. But اس سے بھی interesting part میرے لیے یہ ہے that there is a family that has been arrested, incarcerated, بیٹی کو, داماد کو, جوان واشف کو, خود کو. And there is this marriage happening جس کے اوپر she's tweeted that she needs her me time, she needs her personal time, اور لوگ ان کو تنگ مت کریں, اس کی stories مت share کریں. And she is still the news of the day. Her photos are still making rounds on social media. So as a communication analyst, as a communication person, میرے لیے اس سے زیادہ fascinating جو ہے وہ ایک case study نہیں ہے کہ how she managed to pull off something جو کہ مطلب آپ شادی کی بات کرتے ہیں, people talk about the bride and the groom, but people were talking about the mother. So میرے لیے communication کے angle سے it was a very fascinating event. But coming back to the other points, میں جو ہے وہ جب میں نے یہ بات کی تھی نا کہ ہمارے ہاں نیوز روم کے We're losing him. I think ثاقب کو lose کر رہے ہیں ہم. In the meantime, let me just come back to Sahar. آپ نے ایک mention کیا تھا کہ کوئی بھی ایسا ڈیجیٹل جرنلسٹ نہیں تھا جس نے ان کے کاسٹ آف دی ایونٹ کے اوپر رپورٹ کیا ہو. اس میں ایک سوال جو میرا آپ سے یہ ہے کہ ایکسیس کا بھی ایشو ہو جاتا ہے پھر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو. بڑی میڈیا آرگنائزیشنز کے پاس ہو سکتا ہے وہ ایکسیس ہو لیکن وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. سو لوگ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. سو اف آئی ور ٹو لک ایٹ دی اسٹرکچر نظر آئے گا کہ جو رپورٹرز نے اگر آج نیوز روم جوائن کیا, I think can you hear me? Saqib, we lost you for a while. Yeah. So we lost the meat of what you were saying. Yeah. So I was talking about the ladder. So the ladder is کہ اگر جو ہے وہ میری ایسپریشن یہ ہے کہ میں نیوز روم میں جاؤں, آج میں جو ہے اگر میں موسم کا حال سنا رہا ہوں تو probably 2 years down the line, 3 years down the line مجھے ایک بیٹ مل جائے. بیٹ ملنے کے بعد میری سب سے بڑی ایسپریشن کیا ہوگی, کیونکہ میرے پاس جو نیوز روم میں سب سے سینئر رپورٹر ہوتا ہے یا جو بیورو چیف ہوتا ہے, he is covering either PTI اور PMLN. تو میری ایسپریشن یہ ہے. اینڈ دین آئی سی آر نیوز اینکرز یا جو ہمارے ٹاک شوز اینکرز ہیں, دے میک لوڈز آف منی اینڈ دے ڈسکس پالیٹکس. سو اٹس سیکسی بیکاز وہاں پر پیسہ ہے. سو دیٹس مائی ریزننگ. بٹ آئی کمپلیٹلی اگری ود عامر صاحب پوائنٹ جب انہوں نے اس کو امینڈ کیا تھا کہ people want to report on the biggest story of their society. So unfortunately پاکستان کے اندر we have a very politically charged جو ہے وہ society. So ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے entertainment بھی اور سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایک source of information بھی politics ہے unfortunately. Last point I want to make about social media is کہ it's very interesting that we are having this discussion today اس لیے because today or probably yesterday were the most tough days for the social media, especially for Facebook. اور جو ہے وہ پاکستان کے سب سے زیادہ آڈینس فیس بک کے اوپر ہی ہے. اینڈ وی آر ایٹ اے پوائنٹ جہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا فیوچر کیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ورلڈ اوور سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈکلائن کے اوپر جا رہا ہے. ابھی جو فیس بک کے جو اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ہے اینڈ اس کے علاوہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں, ابھی میں یہ ایک جو ہے وہ کامنٹ بھی پڑھ رہا تھا جس میں پوچھا گیا ہے کہ فیس بک کے اوپر کوئی ریگولیشن کیوں نہیں ہے. سو آئی تھنک ہم ابھی کافی پیچھے ہیں. دنیا بھر کے اندر پیپل آر موونگ بیونڈ دا سوشل میڈیا, they are moving towards metaverse یا جو بھی نئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اس کی وجہ سے ہم ابھی بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کو فیوچر یا ایون جو ہے اس لیول پر دیکھ رہے ہیں. بٹ دنیا کے اندر مارک زکربرگ جو ہے وہ کل میرے خیال سے $250 ارب اس نے جو ہے وہ لوز کیے ہیں اپنی جو ہے کمپنی کی ویلیو کے اندر. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. سہر اگر آپ اس سوال پہ کامنٹ کرنا چاہیں تو پھر میں ایک آڈینس سے ایک کوشچن آیا تو میں پینل کے سامنے رکھ دوں گا. اری آپ کا سوال کیا تھا, میں بھول گیا. Why don't you go forward with the Q&A? Sure. So ردا شاہ کا یہ سوال ہے, پینل کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو جواب دینا چاہے. She is asking, I know it's a little off topic, but I want to know about the social media ownership, which is immensely concentrated, and its complete control over users and their ability to access content. Do you think regulations should be introduced? If so, what kind? یار یہ ریگولیشنز کی بات ہوئی ہے. Is it okay if I start, Umer? Yeah, sure. Please go ahead. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے سے ہر حکومت آتی ہے نا پاکستان کے اندر پچھلے 8-10 سالوں کے اندر, تو
ان میں سے کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ پیمرا کو کس طرح سے زیادہ افیکٹو بنایا جائے تاکہ وہ بہتر کنٹرول ایکسرسائز کر سکے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر. یہ چیز ہم نے اخباروں میں ہوتے دیکھی تھرو آؤٹ ضیاء اینڈ ایون آفٹر ضیاء اٹ کیریڈ آن ایون ٹوڈے. if you look at it, تو وہی پریشر جو ہیں وہ ہیں ہمارے اوپر سینسرشپ کے اینڈ their objective obviously is to control. میں ہمیشہ ہر حکومت کو اگر کسی نے میرے سے پوچھا ان کو بھی اور میڈیا اونرز کو بھی جرنلزم کے اندر جنرلی میری ہمیشہ سے آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ ایک جرنلسٹ کے اوپر سب سے زیادہ افیکٹو کنٹرول اس کی آڈینس ہوتی ہے. اس سے زیادہ افیکٹو کنٹرول کسی صحافی کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا اور آج کل تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ ایک صحافی کو نوکری سے نکال بھی دیتے ہیں تو اس کے پاس اب اور آؤٹ لیٹس ہیں. اب وہ کسی پروڈیوسر کسی براڈ کاسٹ انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اب وہ خود ہی رپورٹر ہے, خود ہی پروڈیوسر ہے, خود ہی اپنے آپ کو براڈ کاسٹ کرتا ہے. اینڈ ریگولیشن جو ہے that is, I feel, one of the worst ways of going about correcting the media or kind of controlling it. وہ نہ کبھی پہلے اس نے کام کیا نہ اب وہ کام کرے گا. بات ساری یہ ہوتی ہے یار کہ look at the basics of everything. ہم نے اخباروں کے زمانے میں بھی, میں آج کا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, ڈون اخبار جو ہے وہ نہیں بیریا ٹاؤن کا پروموشنل خبریں نہیں چھاپتا ہے. ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, I'm sure کہ ہے, لیکن وہ نہیں ان کی خبریں جو کہ باقی تمام اخبار اور زیادہ تر ٹی وی چینل جو ہیں وہ نیو ایئر ایو کے اوپر بیریا آئیکن کے اوپر پٹاخے چلتے ہیں تو وہ سارے ٹی وی چینلز کور کرتے ہیں. وہ بھی خبر ہے لیکن سارے ٹی وی چینل کور کرتے ہیں. ڈون نہیں کرتا, بلکہ اگر بیریا ٹاؤن کے بارے میں کوئی کریٹیکل خبر ہو جو دوسرے اخباروں میں یا دوسرے چینل میں دب جاتی ہے تو وہ ڈون چھاپتا ہے. یہ اگزامپل میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ کا جو ایڈیٹر کا جو اونرشپ کا جو اپنا ایک کیریکٹر ہوتا تھا وہ بہت بڑا ڈٹرمنٹ ہوتا تھا کہ ان کا میڈیا جو ہے وہ کیسے بہیو کرے گا ان اے گیون سچویشن. اب فار ایگزامپل ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نیا کرپٹنگ انفلوئنس, جیسے براڈ کاسٹنگ از ویری گلیمرس بزنس آل اوور دا ورلڈ, اٹس گلیمرس. میں آپ کو انگلینڈ کا ایگزامپل دیتا ہوں. آئی واز ود دا ورلڈ سروس اور میں اکثر ورلڈ ٹی وی کے اوپر آیا کرتا تھا, لیکن ورلڈ ٹی وی یو کے اندر نہیں ہوتا, اس لیے کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا. میں پہلی دفعہ وہاں پر لوکل ٹی وی چینل پہ ریلیٹڈ ٹو سم اسٹوری اباؤٹ پاکستان میں ان کے لوکل نیوز کے اوپر میں نے ایڈ. almost all of my neighbors the next day when I bumped into them they said, oh, we saw you on TV, saw you a journalist and all that. So یہ جو گلیمر کا ایلیمنٹ ہے نا اس کے اندر ابھی بھی آپ دیکھیے کہ میں مذاق کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ کہ پاکستانی نیوز انڈسٹری نے شاید بالی ووڈ کو دیکھ کے ان کو یہ فارمولا سمجھ میں آ گیا ہے جو بالی ووڈ کو 1980s میں پتہ چل گیا تھا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی فلم میں کیریکٹرز اچھے ہیں یا نہیں ہیں, ایکٹرز اچھے ہیں, اس کا ڈائریکٹر اچھا ہے یا نہیں, اس کی کوئی کہانی اچھی ہے یا نہیں, ایک دو تگڑے آئٹم نمبر ڈال دیں آپ فلم کے اندر, فلم ہٹ ہو جائے گی. تو آئی تھنک ہماری نیوز میڈیا نے ان سے وہ سیکھ لیا ہے کہ آپ کی خبریں کیسی بھی ہوں, یہ جو ٹاک شو کا فارمیٹ ہے اس کے اندر آئٹم نمبر اگر آپ کے پاس اچھا ہے نا اس ٹاک شو کے اندر تو آپ کا ٹی وی چینل یا نیوز چینل جو ہے وہ ہٹ ہو جائے گا. سو یہ کرپٹنگ انفلوئنسز جو ہیں they are a part of our society, they are a part of what we are. جو پہلے اخباروں میں ہوتے تھے ٹی وی میں ہوتے تھے وہی اب سوشل میڈیا کے اندر ہے. That is why regulation of any kind is not necessarily a solution. For example, اگر ہمارے ملک کے اندر ڈیفیمیشن لاز تکڑے ہوتے, اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہوتے, ایک ایسا کلچر ہوتا ہماری سوسائٹی میں, تو کسی کی کیا ضرورت تھی کہ جو جس طرح کی گالی گلوچ آپ آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ کر سکیں. وہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے سارا. سو آپ اپنا اوور آل ماحول جو ہے آپ اس کو امپروو کریں گے, ایوری تھنگ ایلس ول امپروو. اگر اس ماحول کو اسی طرح سے رہنے دیں گے اور ایک میڈیا کے اوپر چھلانگ لگانا شروع کر دیں گے, سوشل میڈیا کو امپروو کرنا شروع کریں, کچھ نہیں ہونے والا. تھینک یو سو مچ عامر صاحب. بس کنکلوژن کی طرف جائیں گے. ثاقب سے اگر میں ایک سوال پوچھ لوں پھر آئی ٹیک دی فائنل کلوزنگ کمنٹس فرام سہار ایز ویل. تاکہ آپ نے بات کی اپنے آخری کامنٹ میں کہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا ڈکلائن پر ہے لیکن پاکستان میں غالباً ایسا تاثر نہیں ہے اس وقت. تو فرام یور پوائنٹ آف ویو اگر آڈینسز کو ویورز کو اچھی ہیومینیٹیرین رپورٹنگ دیکھنی ہو تو کن آرگنائزیشن کن پلیٹ فارمس کی طرف جائیں پاکستان میں؟ دیکھیے میں کسی آرگنائزیشن کو انڈورس تو نہیں کروں گا اپارٹ فرام مائی اون آرگنائزیشن. سو انڈیپینڈنٹ اردو کے اوپر آئیں. میں بس
कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक वाली जो है वो कॉल टू एक्शन कहना रह गया है, बट इंडिपेंडेंट उर्दू डज गुड ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज. आई एम श्योर BBC डज इट, आई एम श्योर DW उर्दू डज इट, वॉइस ऑफ अमेरिका की बहुत अच्छी स्टोरीज हैं. इवन आप कुछ मॉर्निंग शोज उठाकर देखें, आपको जियो का जो मॉर्निंग शो है उनकी बहुत अच्छी स्टोरीज हैं. समा का मॉर्निंग शो भी एक टाइम के ऊपर अच्छा था. सो मॉर्निंग शोज के अंदर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है. इवन अगर आप 6 बजे का बुलेटिन भी उठाकर देख लें, वो जो है वो कम्प्लीटली हार्ड कोर जो है वो पॉलिटिकल कंटेंट उसमें जो है वो नहीं होता. आपको जो है वो 6:20 के बाद आपको ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट की स्टोरीज मिल जाती है. बट सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि सोशल मीडिया अब टीवी का एजेंडा डिक्टेट कर रहा है. सो अगर सोशल मीडिया ने डिसाइड कर दिया है कोई ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट की स्टोरी टॉप ट्रेंड पे है, सब लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो टीवी को वो उठानी पड़ेगी और उसको अपनी जो है ना वो मेन हेडलाइन जो है वो करनी पड़ेगी. बिकॉज टीवी वाले भी इतनी मेहनत नहीं करते. टीवी वालों के लिए जो बैरोमीटर है कि कौन सा कंटेंट टॉप के ऊपर है वो सोशल मीडिया ही है, और वो वहीं से देखते हैं कि भाई सबसे ऊपर कौन सी खबर चल रही है, तो लगाओ भाई इसको 9 बजे के बुलेटिन में से हम जो है वो टॉप ऑफ द आवर चलाएंगे. सिर्फ एक बात मैं जो है वो रेगुलेशन के हवाले से करता जाऊँ. आमिर साहब की बात से एग्री करते हुए कि रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. मैं आमिर साहब की एक और बात को बीच में लाना चाहता हूँ. एक तो ये कि रेगुलेशन अगर किसी को करनी है तो दैट हैज टू बी अस. अगर सहाफी अपना वॉच डॉग का किरदार अगर छोड़ देगा, खासतौर पे इन टर्म्स ऑफ दिस बिग टेक, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि इनके जितने अभी स्कैंडल्स आ रहे हैं, अभी जो फेसबुक की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो उनके विसल ब्लोअर्स सामने आ रहे हैं, वो इसेंशियली गार्डियन के पास वो विसल ब्लोअर्स आ रहे हैं या वॉशिंगटन पोस्ट के पास आ रहे हैं, तो वो उनकी रेगुलेशन कर रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और उसी की वजह से जो है अभी जो है वो सेनेट के अंदर उनकी हियरिंग्स भी होनी है. बट आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट हम थोड़ा सा जो है वो अपनी ऑडियंस को या जो है वो अपनी मासेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं. आई थिंक थोड़ा सा उन्हें ट्रस्ट करें. एवोल्यूशन की जरूरत है. जैसे आमिर साहब ने शुरू में बात की थी, लोगों को इवॉल्व होने दें. पीपल विल लर्न, सोसाइटीज लर्न करती हैं, पीपल विल ट्रस्ट न्यूज. देयर विल कम अ टाइम जब लोग खुद से जज करना शुरू कर देंगे कि कौन सी चीज फैक्ट है, कौन सी चीज ओपिनियन है, कौन सी चीज फेक है, कौन सी चीज सच है. Thank you. Sahar, any closing comments? That was a really good closing. I think I also have a lot of faith that the system will evolve, and trust and transparency is going to be dictated by audience and consumers. And I also feel like media literacy increase. And I see this with people younger. My writers right now advice, they are mid-20s to late 20s, and they are so much smarter than some very people older than me when it comes to verification, because they grew up around the internet. They grew up around, and that's all that we do. We produce one story a day from South Asia, and advice. One of our big authority areas is crimes. We cover a lot of crime, and my reporters do such a good job. It's a digital reporting job. Sometimes a writer in India is reporting on Pakistan. They spend that time in verifying. We just did a big investigation into this story from Quetta, which was a very big story in Quetta, but national media picked it up and dropped it like a hot rock about these two missing sisters that was linked to a sextortion case. And this DJ Khilji, who his grandfather was known as the Hashish King of Quetta. Him and his brother both have been arrested in the abduction and sextortion case. The sisters are still missing, the Hazara sisters. It's such a big story in the Hazara community. Unme abhi bhi impact chal raha hai. Hazara women are saying they're getting attacked in schools and universities because of this case, and no one's talking about it, but we managed to cover it as an international story. So I think there's a lot of hope, and we wouldn't have been able to do it without social media, because we have this direct connection with these activists and journalists and lawyers from the Hazara community. In Quetta, it's completely a digitally reported story. We didn't go to Quetta for it, but it was an investigation we spent 6 weeks on. So I'm very hopeful. I'm very hopeful. Thank you so much. Fiza, if you can join us and close the session, please. Yep. Thank you so much, everyone, for joining in. Thank you so much, Aamer Saab, Sahar, Saqib, and Umer for taking out the time. I hope that despite all the challenges that you have mentioned, that journalists who tuned in today and who will be listening to this later are able to learn something. And जो हम लोगों को और ICRC का एक sort of goal रहा है to have various standards of reporting and ethical reporting, humanitarian issues के ऊपर, I hope that we continue to do so. Thank you so much, everyone, for joining in. Hafiz.